Now let's solve some questions on working capital requirements. For this, we are using illustration 10 of your book. Now in the question, it is given that the company produced 10,000 units, but the normal level of capacity is 60%, right? We're talking about the annual capacity here. So let's first calculate the level of activity for which we have to make a working capital requirement schedule, which is 6,000 units, right? 60% of 10,000. Now, this is the normal level of activity and the annual level of activity, right? Now, the divisions for your cost is given, but हम एक chart बना लेते हैं. Let's calculate the element of cost so that we clearly know कि raw material का cost कितना है, labor का कितना है, overheads का कितना है, right? So on and so forth. Raw material is given 4, direct labor is 3, overheads 100% of direct labor मतलब 3 rupees ही होगा, right? Cost आ जाता है आपका 10. Now the profit is given 1/6 of selling price, which is nothing but 1/5 of your cost, right? So ये आ जाता है as 2. 10 plus 2 becomes the sale value, which is 12, right? Now एक छोटी सी cost sheet आपकी बन गई है. Now look at the question. The details of your holding period is given in months. Okay. Now for ease of calculation आप क्या करेंगे, आपका जो level of activity है उसको भी months में shift कर देंगे. Okay, same parameter. So 6,000 if annual, तो monthly कितना हुआ, 500 units per month company produce करती है, right? Now moving on to the schedule of working capital requirements. First you mention your current assets, raw material. Now कितने units produce होता है per month, 500 into per unit cost is 4, right? Into कितने months के लिए हम store कर रहे हैं, 2 months, so into 2, right? This gives you 4,000, the cost of your raw material. Similarly, you will calculate the cost of working capital. अब processing time आपको 3 months का दिया हुआ है. So raw material again 500 units into 4 into 3 months, which is nothing but 6,000. Now for labor and overheads, remember we take an assumption that labor and overheads have been used only to 50% capacity, right? So 3 months के लिए अगर आप hold कर रहे हो तो this becomes 1.5 each. So 500 units into 3 labor cost into 1.5 months, right? अब सबका टोटल आप करेंगे तो 10,500 आता है. Then you move on to finished goods. Now finished goods का टाइम आपको दिया गया है 1 month. Again 500 units into 10 into 1 becomes your finished goods cost, right? सेम ही चीज़ कर रहे हैं हम यूनिट्स ले रहे हैं, उसका कॉस्ट ले रहे हैं, कितने मंथ के लिए हम उसको होल्ड कर रहे हैं वो देख रहे हैं, एंड देन वी आर ट्राइंग टू गेज द फाइनल कॉस्ट, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू डेटर्स. एज डिस्कस 2 मेथड्स होते हैं. हम अपनी मेन कॉस्ट शीट में से जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का शेड्यूल हम बना रहे हैं उसमें हम लोग कॉस्ट बेसिस पे ही डेटर्स को वैल्यू करेंगे. बट बिकॉज इन लॉट्स ऑफ बुक्स दे हैव वैल्यूड इट एट अ सेल प्राइस पे उसको वैल्यू किया गया है, हम एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी अपने सोल्यूशन में लिख देंगे, राइट? मूविंग ऑन, आप अपने करंट एसेट्स का टोटल कर लेंगे, राइट? एंड देन यू विल स्टार्ट टू लिस्ट आउट योर करंट लाइबिलिटीज. सो क्रेडिटर्स दिए हुए अगेन 500 यूनिट्स into the value of your raw material, that is 4, into the payment time, which is 1 month, right, which comes up to 2,000. Then there is some lag in the payment of wages, ठीक है, तो outstanding again 1 month का होगा. 500 units into your labor cost, which is 3 into 1, right, sums up to 1,500. इसका जब आप टोटल करेंगे you get your total current liabilities. Now you subtract both of these and you get your working capital requirement, right, which is nothing but 26,000. Now alternative solution एक आप नीचे लिख देंगे for debtors. After you've completed this question,
सबसे पहले आप वहाँ नोट में लिखेंगे कि डेटर्स हैव बीन वैल्यूड एट say your cost, right? And then you give your alternate solution which will say if debtors were to be valued on sale price, तो फिर क्या होता? डेटर्स का वैल्यूएशन दिखा दोगे, 12,000 हो जाता. टोटल एसेट्स आपकी इंक्रीज हो जाती बाय 2,000, राइट? सो 31,500 हो जाता, माइनस करंट लाइबिलिटीज, एंड देन योर वर्किंग कैपिटल वुड हैव बीन 28,000. तो टू बी ऑन अ सेफ साइड हम ये चीज़ कर देंगे. ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं. वी आर रेफरिंग टू इलस्ट्रेशन 7, पेज 339 ऑफ योर बुक. अब यहाँ पे लेवल ऑफ एक्टिविटी दिया हुआ है 5,200 यूनिट्स, और इन्फॉर्मेशन में जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें आपके जो कंपोनेंट्स हैं दे हैव बिन से मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वीक्स, राइट? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपका जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है यू विल से फाइंड आउट हाउ मच प्रोडक्शन हैपन्स इन अ वीक, ओके, सो दैट योर कैलकुलेशंस हैपन स्मूथली. तो 5,200 डिवाइड बाई 52 वीक्स, 100 पर वीक, एंड देन द होल प्रोसेस इज सेम. करंट असेट्स पहले आप लिस्ट आउट कर लेंगे. सबसे पहले रॉ मटेरियल, अब कितने यूनिट्स है, 100 यूनिट्स इंटू योर रॉ मटेरियल कॉस्ट विच इज़ 8, इंटू कितने टाइम के लिए आप वो रॉ मटेरियल को अपने से फैक्ट्री में रख रहे हो, राइट? अच्छा, इफ़ इट इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ मंथ्स एंड वीक्स बोथ, ट्राई टू टेक वन थिंग एज बेस. अब जब हमने वीक्स में उसको कन्वर्ट कर लिया है तो इवन इफ सम इंफॉर्मेशन इज गिवन इन मंथ्स, हम क्या करेंगे, वीक्स में कन्वर्ट करके ही उसको कंसिडर करेंगे. जैसे यहाँ पे 1 मंथ दिया हुआ था तो आपने क्या लिया, 4 वीक्स, राइट? सो लेट योर स्टेटमेंट बी यूनिफॉर्म. कहीं आप मंथ्स यूज़ कर रहे हो, कहीं वीक्स यूज़ कर रहे हो, ऐसा मत करना, राइट? ओके, सो करंट असेट्स, रॉ मटेरियल वी हैव डन. वर्क इन प्रोग्रेस अगेन सेम जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, 100 into your cost into the time period for which it is held. Labor overheads 50% कर देंगे, assumption. Again debtors valued at cost and then alternative solution given in your answer itself after you've completed this statement. So finished goods का valuation हमने ले लिया, debtors का ले लिया at cost, cash दिया हुआ था कुछ वो ले लिया, नेट हमारा वर्किंग कैपिटल आ गया, एंड देन अगेन वी हैव गिवन दैट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, राइट? दिस इज हाउ you solve a working capital requirement question. I hope this is clear.